अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, MS डॉट अकेडमी के प्लेटफॉर्म से तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूँ। लेक्चर नंबर 21 के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जो लास्ट टाइम हमने एजुकेशन रिलेटेड जो सिलेबस शेयर किया था लेक्चर 20 में, उससे रिलेटेड कुछ MCQ शेयर करता हूँ जो आई थिंक कल इसका एक टेस्ट भी अरेंज हो रहा है। उसमें अगर आप लोगों ने गौर किया होगा लास्ट वीडियो में, उसमें तकरीबन 35% का एक परसेंटेज नंबर सिलेबस का एक पोर्शन था, जिसमें से मैं आज कुछ MCQ शेयर करता हूं जो रिलेट करती है इसी टेस्ट और एजुकेशन डिपार्टमेंट टेस्टों से। ये जिस तरह आप लोगों के सामने ऊपर है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से जो काफ़ी MCQs है वो कवर करते हैं यहाँ से ही। तो स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 278 द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश। ये नंबर है, जिस तरह वो पास्ट वीडियो में भी ABCD डिफरेंट ऑप्शन है, इसमें राइट ऑप्शन हाईलाइट है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पर्शियन वर्ड, अरेबिक वर्ड, ग्रीक वर्ड एंड लैटिन वर्ड्स। जो राइट ऑप्शन है 278 नंबर MCQs का, वो लैटिन वर्ड्स है, लतीनी जिसको कहते हैं लतीनी लैटिन वर्ड्स। डी नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन ऑफ 278 नंबर MCQs। और व्यूवर्स, ये जो करिकुलम डेवलपमेंट या इंस्ट्रक्शन या एजुकेशन मैनेजमेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन रिलेटेड MCQs पेडागोजी से ही रिलेट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं। तो 279 नंबर MCQs है। द लैटिन origins of the word curriculum lie in the word क्यों और ere, which means to run, away, always, all of these. So right option of 279 MCQs is option 1. Option A is the right option of MCQs 279. 280 number MCQs है, dash is not a simple straightforward collection of object matters. It is something to be felt rather than something to be seen. डिफरेंट ऑप्शन है। A नंबर ऑप्शन है सिलेबस, B नंबर ऑप्शन है कंटेंट, C नंबर ऑप्शन है करिकुलम, D नंबर ऑप्शन है all of these. So your right option of 280 number MCQs is option C. Curriculum is the right option. Curriculum is not a simple straightforward collection of subject matter. It is something to be felt rather than something to be seen. Viewers, 281 number MCQs है, curriculum is dash. A नंबर ऑप्शन है जस्ट अ कोर्स, B नंबर है ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, C नंबर ऑप्शन है फ्रेमवर्क, D नंबर है नन ऑफ दीज। सो योर राइट ऑप्शन ऑफ 281 नंबर MCQs इज ऑप्शन B, ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। 282 नंबर MCQs है, करिकुलम कंप्लीटली फोकसेस ऑन डैश। A नंबर ऑप्शन है स्टूडेंट, B नंबर ऑप्शन है टीचर्स, C नंबर ऑप्शन है पेरेंट्स, D नंबर ऑप्शन है सोसाइटी। सो योर करिकुलम कंप्लीटली फोकस ऑन सोसाइटी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन D, सोसाइटी। 283 नंबर MCQs है, अ ट्रू ब्लूप्रिंट इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ अ टीचर इज कॉल्ड डैश। A ऑप्शन है लेसन प्लान, B शेड्यूल, C करिकुलम, D कंटेंट। सो योर राइट ऑप्शन है C number curriculum. A true blueprint in the mind and heart of the teacher is called curriculum. Viewers, 284 MCQs है, what is the nature of curriculum? A number option है constructive, B critical, and C option is creative, and D all of these. So your right option of MCQs number 284 is option D, all of these. So your 285 number MCQs है, scope of curriculum is wider than dash, wider than content, syllabus, outline, all of these. So your right option है D number 285 का all of these. Your 286 number MCQs है, syllabus is dash word, is a Greek word, Latin word, Persian word, Arabic word. 286 का जो राइट ऑप्शन है वो A नंबर ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, Greek word. 287 नंबर MCQs है, dash is a summary of topic covered or units like chapter in any subject.
Option A content, option B curriculum, option C syllabus, option D all of these. So your right option of 287 number MCQs is option C syllabus. So your right option is C syllabus. 288 number MCQs है dash can content, outline, objectives and time required. Viewers different option है A syllabus, B content, C curriculum, D all of these. So your right option है 288 number MCQs का syllabus. Syllabus can contain outline, objects and time required. 289 number MCQs viewers. Syllabus is a dash, is a course, is a design, is a subject, is a none of these. So your right option है 289 number MCQs का C number option subject. 290 MCQs, a set of classes or a plan of study on a particular subject usually leading to an exam or qualification is called dash. Option A course, option B curriculum, option C syllabus, option D all of these. So your right option of 290 number MCQs is option A course is the right option of 290 number MCQs. 291 MCQs is syllabus is dash in nature. So viewers 291 number MCQs and having a different option such as option A is descriptive, option B is prospective, option C is both A and B, option D is none of these. So viewer the right option of 291 MCQs is option A descriptive is the right option of 291 MCQs. Syllabus is descriptive in nature. So viewer we are carrying forward towards the 292 number MCQs. Syllabus is prepared by dash, prepared by teacher, prepared by student, prepared by government, prepared by all of these. So your right option of 292 number MCQs is option A teacher. Syllabus is prepared by teacher. So your next MCQs is 293. Which type of curriculum emphasize direct instruction? Option A physiological curriculum, behavioral curriculum and cognitive curriculum, constructive curriculum. So your right option of 293 MCQs is option B behavioral curriculum, that already underline the right option. 294 number MCQs is all experiences of the children for whom school assume responsibility. So your option A is curricular activities, co-curricular activities and school programs and curriculum. So your right option of 294 number MCQs is option D curriculum. Curriculum is the right option. So yours next MCQ is 295. Which curriculum is emphasized in Erickson's theory? Erikson is a philosopher, Western philosopher, educational philosophers, and every philosopher having their own theories. So Erikson also their own theories related to education. So here is the direct instructional curriculum. B option is social curriculum. C is cognitive curriculum. D is behavioral curriculum. So your right option of 295 is option B social curriculum is the theory of Erickson's which relate to education. 296 MCQs is making value judgment about curriculum is dash. Option A is curriculum evaluations, option B is curriculum design, option C is curriculum development, option D curriculum element. So the right option of 296 MCQs is option A curriculum evaluation. So viewers the right option is curriculum evaluation. Making value judgment about curriculum is curriculum evaluations. So your next MCQs is 297. It's school level curriculum development by dash, provincial government, B option is federal government, C option district education office, C number option is text board. So the right option of 297 MCQs is
A option, provisional government. Provisional government is the right option of 297 MCQs. So your next MCQs is 298, which is related to curriculum development and institution, which is the basic and key MCQs related to education department is such as ETA and TS. Who said, 298 MCQs, who said a curriculum is a design of a social group for educational experiences of their children in schools. So व्यूअर यहाँ पर भी डिफरेंट ऑप्शन है. H. Ruggs, B नंबर ऑप्शन है M. Johnson, C नंबर ऑप्शन है G. A. Bencham and D number option है J.F. Kerr. So your right option of 298 MCQs is C option, G. A. Bencham. So your next MCQs है 299. 299 MCQs है according to Lawton there are dash element of education. Option A 7 elements, option B 5 elements, option C 3 elements, option D 2 elements. So your right option of 299 number MCQs is option C 3 elements. According to Lawton there are 3 elements of curriculum. 300 number MCQs. Reconstruction educator should emphasize on curriculum that highlight dash. Option A social reforms, option B traditional effects, option C scientific knowledge, option D logical studies. So your right option है A social reforms is the right option of 300 number MCQs. 301 MCQs dash related to the physical or activity base. Option A hidden curriculum, option B co-curricular, option C taught curriculum, option D written curriculum. So your right option of 301 MCQs is co-curricular, relate to the physical or activity base. Viewers, 302 number MCQs, unwritten social rules and expectation of behavior that we all seem to know but never thought is called dash. Option A is hidden curriculum, option B is co-curricular, option C is assist curricular, option D all of these. So your right option of 302 MCQs is option A hidden curricular. Unwritten social rules and expectation of behavior that we all seem to know but never thought is called hidden curricular. We were 303 MCQs. The activity and force which influenced curriculum developer in their curriculum decision making task is called dash. Option A curriculum problem, option B curriculum presage, option C curriculum conception, option D is none of these. So your right option of 303 number MCQs is option B curriculum presage. Viewers, 304 number MCQs हैं. The first step of curriculum development of planning is dash. Different option है A, B, C, D. Option A है curriculum team, B है conduct assessment, C number option है identify issue and problem / problem means issue or problem. D number option है none of these. So you are the right option of 304 number MCQs is option C identify issue or problems. We were 305 number MCQs in sociological foundation of curriculum developer must know the nature of dash. We was option A है child, option C B है teacher, option B है teacher, option C है content, option D है society. So we were the right option of 305 number MCQs is option D society. So viewers, in sociological foundation of curriculum developer must know the nature of society. 306 number MCQs who represented the rational or objective model of curriculum. Viewers, option A है Ralph Weller and Hilda
ताबा। बी नंबर है व्हीलर एंड हॉवर्ड नेचल्स। सी नंबर ऑप्शन है डिकर वॉल्कर एंड स्किलबेक। डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दी। सो योर राइट ऑप्शन 306 नंबर MCQ इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रॉल्फ व्हीलर एंड हिल्डा ताबा। 307 number MCQ is a wind teller represented the objective model. ऑप्शन ए है 1932, ऑप्शन बी है 1937, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी है 1962. So your right option of 307 number MCQs is C 1949. Viewers 308 number MCQs है according to Rolf Taylor, 3 sources must look when developing a curriculum. Which one is first? A number option है learner and their background. B number option है present and future society. C number है knowledge of major discipline. D number option है knowledge about teachers. So your right option of 308 number MCQs is option A. Learner and their background. 309 number MCQs Rolf Taylor model. First step is dash. A number option है selecting learning objective. B number option है starting objective. C number है evaluation. D number है none of these. So your right option of 309 number MCQs is option B, starting objective. Option 310 है Rolf Taylor model. Last step is dash. A number option है selecting learning objective. B है starting objective. C है organizing learning experiences. D है evaluation. So your right option is D, evaluation. 311 number MCQs. How many steps in Hilda Taube model? A number option है 4, B है 6, C number option है I think 7. So your right option है C number 7. 312 number MCQ. First step of Hilda Taube model is dash. A number option formulation objective. B है selection of content. C number है diagnosis of needs. D number है selection of content. Right option of 312 number MCQ is option C, diagnosis of needs. 312 13 number MCQs है in diagnosis step of Taube model. Developer determine the need of dash. A option है parents. B option है society. C option है student. D option है both B and C. So your right option is D, both B and C. Society and student is the right words. So here in D number option both are mentioned with the reference of B and C number. So your right option है D number. 314 number MCQ. The second step of Taube model is formulation objective, because through objective we achieve our dash. A number option है aims. B है goals. C education. D है bright future. Viewers right option है 314 number MCQs का B number goals. Viewers 315 number MCQs है through which step curriculum planners choose the methodology or strategy to involve learning with the content. Option A selection of content. B is selection of learning experience. C number है organizing of learning experience, and D number option formulating objective. Your right option है 315 number MCQs का selection of learning experiences, means B number option. 316 number MCQs है who represented the cycle model of curriculum. Option A है Rolf Taylor and Hilda. B है Wheeler and Howard Nichols. C है Decker Walker and Silkbeck. D है none of these. So your right option 316 number MCQ उसका B number Wheeler and Howard Nichols. 317 number MCQ है 317. Which Wheeler? When Wheeler represented his cycle model?
ए नंबर ऑप्शन है 1965, बी नंबर ऑप्शन है 1967 एंड बी 1967, डी नंबर 1969. सो व्यूअर राइट ऑप्शन है जो 317 नंबर MCQs इज ऑप्शन बी. व्यूअर नेक्स्ट MCQs है 318. द फर्स्ट step of cycle model is dash. Option A evaluation, option B selection of learning experience, option C aims, goal and objectives, option D selection of content. So viewer, the right option of 318 number MCQs is option C, aims, goals and objective. अच्छा व्यूअर्स 319 नंबर MCQs है. When Howard Nichols presents his curriculum model. Option A 1972, option B 1974, option C 1976, option D 1978. Your right option है 319 नंबर MCQs का 1978. Viewers, the next MCQ is 320. First step of Howard Nichols model of curriculum is dash. A option is situation analysis, B है selection of objectives, C evaluation, D है selection of organization of content. So your right option of 320 number MCQs is option A, situation analysis. 321 number MCQs है the step of Howard Nichols model of curriculum is dash. A option is selection of objectives, B है evaluation, C है situation analysis, D है selection and organizations of method. Right option है 321 number option is option C, situation analysis है. Viewer 322 number MCQs है who represent the dynamic model of curriculum. A option Rolf Taylor and Hilda, B number option है Wheeler and Howard Nichols, D number है Decker Walker and Selbeck, C number, D number है none of the. Right option है 322 number MCQs का C number option Decker Walker and Selbeck. Viewer 323 number MCQs है when Decker Walker represented his curriculum model. A option 1965, B option 1967, C option 1969, D option 1979. So your right option of 323 number MCQs is option D. 324 number MCQs है how many phases of worker model of curriculum develop. Option A B 3, option B 4, option C 5, option D 6. राइट ऑप्शन है 324 नंबर MCQs का ऑप्शन ए 3. So your next MCQs है 325 नंबर MCQs है which phase made from idea point of view belief and value of the Decker Walker model. A number option है platform, B है deliberation, C है curriculum design, D है none of the. Right option of 320 number MCQs is option A, platform. 326 number MCQs has second phase of Decker Walker model of curriculum is dash. A option A, platform, option B, deliberation, option C, curriculum design, option D, none of these. So your right option of 326 number MCQs is option B, deliberation. MCQs number 327. When Malcolm Silkback presented dynamic model. Option A 1972, option B 1974, option C 1976 and option D 1979. So your right option है 327 number MCQs का option C 1976.
व्यूअर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पेडागोजी एंड करिकुलम ऑफ एजुकेशन रिलेटेड, जो 35% पोर्शन रहता है किसी भी टेस्ट, चाहे वो सीटी रिलेटेड हो, पीटी रिलेटेड हो, डीम रिलेटेड हो, पीटी, डीएम, पीएसटी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि उसमें ना पेडागोजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, जो मैक्सिमम उसका तकरीबन 15 to 20 to 25% एमसीक्यूज मार्क्स वहाँ से कवर करते हैं, पेडागोजी से, करिकुलम से, और इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, असेसमेंट, क्लासरूम इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट, करिकुलम, डिफरेंट साइड को वो कवर करते हैं। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, थीरीज ऑफ एजुकेशन, डिफरेंट थिंकर्स रिलेटेड थीरीज और मॉडल्स ऑफ एजुकेशन, डिफरेंट साइड को कवर करते हैं। तो इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि क्योंकि इसमें ना 25 to 30% मार्क्स यहाँ से कवर करते हैं। और बाकी भी अगर आप लोग इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, हिस्ट्री और करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, वर्ल्ड अफेयर अगर आप देख ले तो मेरा ऑलरेडी इस पे ना पास्ट वीडियोस इस पे अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। पर्टिकुलरली फाइन आर्ट मीन्स ड्राइंग या डीएम पोस्ट रिलेटेड जो प्योर और पर्टिकुलर एमसीक्यूज है, वो भी मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, वो भी प्रीवियस लेक्चर में से आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं। अच्छा, यूर 328 नंबर एमसीक्यूज, इन विच फेज ऑफ Malcolm-Silbeck model check the external and internal position of school and also look the past and future of the concerned community. Option A situation analysis, option B design, option C goals, option D implementation. So your right option of 328 number MCQs is option A, situation analysis. Next number MCQs है 329. Which curriculum model mostly used in developing the school? The school curriculum. Option A, object or rational model, option B, dynamic model, option C, cycle model, option D, none of these. So your right option of 229 number MCQs is option D, dynamic model. Next MCQ 330. A framework of action in preparing a curriculum is dash. So your option A, curriculum structure, option B, curriculum design, option C, curriculum function, option D, curriculum evaluation. So your right option of 330 number MCQs is option B, curriculum design. Next MCQs है 331. The mirror of society is dash. Important MCQs है, इसमें काफ़ी लोग इसको मॉस्क को टिक करते हैं। ऑप्शन ए है मॉस्क, ऑप्शन बी है पीपल गैदरिंग, ऑप्शन सी है स्कूल, ऑप्शन डी है हॉस्पिटल। सो योर राइट ऑप्शन ऑफ 331 नंबर एमसीक्यूज इज ऑप्शन सी, स्कूल। योर 332 नंबर एमसीक्यूज है सब्जेक्ट सेंटर ऑफ सब्जेक्ट सेंटर डिजाइन ऑफ करिकुलम रिवॉल्व अराउंड द डैश, अराउंड द डैश। ए ऑप्शन है कंटेंट, बी ऑप्शन है कम्युनिटी, सी ऑप्शन है व्यूअर्स लर्नर और डी ऑप्शन है प्रॉब्लम। सो योर राइट ऑप्शन ऑफ 332 नंबर एमसीक्यूज इज ऑप्शन ए, कंटेंट, अराउंड द कंटेंट। योर 333 नंबर एमसीक्यूज है इन विच डिजाइन ऑफ करिकुलम टीचर प्रोवाइड अ प्री डिटर्मिन्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट they need to teach their students. So your option A is subject centered design, option B है learner, option B है learner centered design, option C है problem centered design, option D है all of these. So your right option है 333 number MCQs is subject centered design. So your इस लेक्चर में लेक्चर 21 में हमने 333 तक कवर की है, और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, तो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिले। थैंक यू।